everyone. I, Dr. Purnima Madan, on behalf of Lloyd Business School, welcome our eminent speaker for today, Dr. Neetu Kamra, all the faculty colleagues and the students who have joined this webinar. Lloyd constantly strives to build knowledge for its young managers by bringing astute leaders and faculty to augment their learning. In order to embrace the future managers with latest developments in the corporate world, Lloyd has taken the initiative to conduct expert talk series called Enhancing Employability Skills for Budding Managers. And today we are having our 15th expert talk on fundamentals of business analytics, role in management. Without much ado, I would like to introduce our eminent speaker for today. We are honored to have with us Dr. Neetu Kamra, ma'am. She's currently working as a specialist in HR and analytics with more than 16 years of corporate and academic experience. Dr. Kamra is currently Area Chairperson, Analytics and Data Science at Lloyd Business School and the IBM Connect at Lloyd, managing the analytics and data science programs at PG and UG level. Dr. Neetu Kamra has previously worked as change management team and HR journalist and specialist in performance management for TCS. She's a certified consultant in SAP HR and worked on projects like Total Energies, McVitie's as SAP HR consultant. She is also a recipient of prestigious Best Young Faculty Award 2021 in data science from coveted Analytics India magazine. She aspires to drive managerial science into the field of management. She is also an IBM certified consultant in business intelligence, predictive analytics, and artificial intelligence. I welcome you, ma'am, and would now hand over the session to you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Ma'am, can I begin? Okay, thanks. Okay. So a very good morning to all the students. We have a good participation of 85 students, even on the last day of the week. That's a Friday. So I would like to welcome you this session hosted by Lloyd Business School. This session basically is titled as Management and the Applications of Business Analytics in Management. Students, okay, so if I may ask you, what do you understand by the word business analytics? Does it make a little sense? Now, when you're supposed to answer me, you just don't have to have a technical expertise, or maybe for that matter, even if you've read or not read about it. I would like to ask you, it's a generic question where you can combine two English words in order to make sense out of it. So if I think you would not be allowed to speak because of the rights, you can very well maybe document it, like post it in the chat box, so that I just get a feeler as to where to begin with, how to begin with. So if you would help me to address my discussion today, what do you think is business analytics? Let's pen down quickly. The more the merrier. What do you think is business analytics? This maybe would align us as to whether we are prepared for the session today or to start thinking in that direction. So all of you can just pen down. What do you think could be business analytics? So I give you 2 minutes. You can quickly pen down and just post it. So whoever gets the top 3 responses would be the highlight of the session. So students, just quickly give your responses. Top 3 students are the highlights. Wonderful. So Sneha comes up first. And then we have Soumya, Shreya, Anupama. Okay, I think now I'm getting the quick responses. So wonderful. So let's go with Sneha's response. The first response, which says business analytics is a set of guidelines, disciplines, and technologies for solving business problems. So basically what it is a set of guidelines, disciplines, and technologies. What are the guidelines, disciplines, and technologies? Why do okay, I take your answer. Looks too technical for you to be able to formalize it so quickly. I'm sure you've taken a support
But then as long as it's a positive response, I appreciate it. Soumya means to analyze trends. Wonderful. Okay. Shrey is the one who says analysis of business models through reporting and the use of IT. Okay. So it's all about business modeling, reporting. Business analytic refers to techniques, skills, practices, and knowledge. Anupama says it. Good enough? Okay, I think all the answers have actually covered what the intent of the session is. So if we were to quickly analyze as to what business analytics is, in a simple word, business analytics stands for business plus analytics. Business is the place where we work, is the place where organizations are constructed, is a place where you have multi-dimensional departments or functions running together to achieve a common purpose of an organization. So everybody from HR, finance, marketing will be aligned together through the organizational strategy, which further would align to the organizational vision and vision statement. So all of them are working towards one organizational strategy. So this is an organization. This organization could produce products or services. Okay. So this is business. Now, in order to get the business running, we have different departments. Departments could be HR, finance, marketing. Each of the departments, in order to run and to smoothly function, requires a base impetus, a base energy, or for that matter, a base which helps to construct people to come together so that they work towards the organizational strategy. And that is data. So these small subunits in an organization create data. This data then is used by business managers for making strategic decisions, big decisions, long-lasting decisions that would impact the business. So that is where analytics comes to play. So what does analytics do? Analytics picks up the data from the business in order to make certain graphs, visual representations, so that a manager can read and make sense of that huge amount of data, which is maybe in terms of numbers, but numbers do not have meaning till those numbers are not able to be projected in a maybe graphical or a visualization mode, so that managers who manage departments in an organization like HR and finance can understand what that data is telling you, so that management decisions can take place in the organization in the right run. So this is what the alignment between business and management is all about. At Lloyd, we believe that management can survive and can be growing only if people like you who are budding managers are aware how to make use of data, are aware how are they supposed to read data. So that is why a very small or a significant tool in analytics is a simple MS Excel, for that matter, which helps you to record data, do analysis, and give a graphical representation. So now that we have understood what is business, what is analytics, business analytics is all about generation of data from the business so that rightful decisions can be made by the management to be able to grow the strategy and the mission and the vision of an organization. Now, to make it more simple, let me go into a PPT mode of presentation so that you can make sense from the visual representation of the presentation. So I'm sharing my screen. I hope you are able to view the screen. So basically, this screen tells you about a very, very important dimension. Why do you require analytics in business? So the whole process started way back when we had the industrial revolution, starting from the phase 1.0, 2.0, 3.0. जो business analytics है, AI है, robotics है, Internet of Things है, ये आपके industry 4.0 में lie करता है. Currently, we are transcending towards 4.5. So we are between industry 4 and industry 5. But what is this industrial revolution? See, for a system and an organization, it started way back. हम लोग originate कैसे हुए? We started way back with the coming up of civilizations like Mesopotamian civilization, then the Egypt civilization near the river Nile,
or for that matter Indus Valley civilization which was next to the river Indus. तो वहां पे उन्होंने क्या देखा लोगों ने कि जहां जहां रिवर या वाटर सिविलाइजेशन या वाटर बॉडी हार्नेस हो रही है वहां रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां हमें वाटर मिलेगा, स्टोन्स मिलेंगे जिससे हम रॉक्स के साथ टूल्स बना सकते हैं। फिर इन्वेंशन हुआ फायर का, व्हील का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे ड्यूरिंग द सिविलाइजेशंस ऑफ इंडस वैली, वेयर इन द मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज, जहां उसके बाद आपकी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आई जिसने सिखाया लोगों को फार्मिंग, रेयरिंग, और धीरे धीरे वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई क्योंकि लोग बढ़ रहे थे। लोगों ने देखा कि फार्मिंग के अलावा भी बहुत हमारे पास काम है जिसपे काम किया जा सकता है। फार्मिंग ने लोगों को हेल्प किया कि एक जगह स्टेशन हो जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट शुरू हो जाए, जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट और भी डिस्कवरीज और इन्फॉर्मेशन की तरफ चल गया, और इसीलिए व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील का इन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था जिसने मैकेनाइजेशन को ल्योर किया, और उससे क्या हुआ, इंडस्ट्री 1.0 दैट इज द वीविंग लूम, उसका ओरिजिनेशन हुआ। तो ये ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटेन में उसने एक्सपोर्ट, वहां से वीविंग लूम शुरू हुआ जहां उन्होंने कपड़ा बनाना की इंडस्ट्री शुरू करी और वो स्प्रेड किया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर रियलाइज हुआ लोगों को हमें और कुछ चाहिए, दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0, जहां पे मास प्रोडक्शन, असेंबली लाइंस, जैसे आपके कार प्रोडक्शन जहां पे असेंबली लाइन पे वो एक ही प्रोडक्ट रखते हैं, यू कीप जस्ट एडिंग पार्ट्स टू दैट रनिंग प्रोडक्ट ऑन एन असेंबली लाइन and the products gets generated, but they realized that they would require electrical energy. So mechanical energy was industrial revolution 1, electricity की खोज से industrial revolution 2.0 निकला। The third was the coming up of computers and electronics, that was industrial revolution 3.0, जहां पे value of computers, और computers फिर इस mechanization of electrical boom को एम्पावर करने लग गया, मशीन्स काम करने लग गई ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कॉग्निटिव कंप्यूटेशनल सिग्निफिकेंस जो जनरेट हुआ थ्रू कंप्यूटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए मशीन्स को रन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे वो टाइम था जहां पे ह्यूमंस ने बैक सीट ले ली और इंडस्ट्रीज ने फ्रंट सीट ले ली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कंपटीशन हो रहा है, इट्स जस्ट दैट ह्यूमन मैन पावर कुड बी यूज्ड better for thinking jobs rather than mechanical jobs. So there is where the coming up of human resources and the generation of Hawthorne studies by HR जो आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे लोगों ने रियलाइज किया कि इंसान मशीन नहीं है, इंसान इंसान है, इंसान से मशीन रन होगी, मशीन से इंसान रन नहीं होगी। फिर जब ह्यूमन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पर है जहाँ पे साइबर फिजिकल सिस्टम्स ओरिजिनेट हो गए, जहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन चीजों का शुरुआत हुई। सो सौरभ, we'll just wait for doubts. Let me finish and then you just have to note down your doubts. Once you note down your doubts, I will give you another 15 minutes before I end, जहाँ पे हम doubts का summation करके I will try to answer you. So just give me a little, because मुझे एक story की शुरुआत करनी दीजिए। जब मेरी story momentum pick कर जाएगी उसके बाद मैं आपके doubts को realize करूंगी, please. So ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, 2.0, 3.0, 4.4 आ गया। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.4 है, यहाँ पे हम सरवाइव कर रहे हैं, जहाँ पे हम साइबर फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पे हम अगर गुड़गांव से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, जहां हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से एक अपनी कार के अंदर रिपोर्ट कंट्रोल से हम अपने घर का जो नोएडा में है अपना एसी ऑन कर सकते हैं, अपना गैराज के डोर ओपन कर सकते हैं, हम अपना हीटर ऑन कर सकते हैं, तो दैट मैटर पूरे हाउस को रेगुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मशीन्स टॉकिंग टू मशीन्स टू मेक आवर लाइफ मच मोर इजियर एंड रनिंग। सो दिस वाज हाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम अप। जैसे जैसे हमारे ऑटोमेशन शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 से, वैसे वैसे डेटा जनरेट हुआ। जैसे जैसे डेटा जनरेट हुआ, जरूरत पड़ गई इंडस्ट्री में ऐसे बिजनेस एनालिस्ट की जो डेटा को एनालाइज कर सके, उसमें से मीनिंग उठा सके, डेटा को रीड करने वाला चाहिए था। पुराने जमाने में हमारे पास स्क्रिप्चर्स थे, वो स्क्रिप्चर्स को रीड करने वाला चाहिए था और डिकोड करने वाला चाहिए था। सिमिलरली
हमारे पास डेटा है, तो डेटा को रीड करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए इस वक्त इस मार्केट में बिजनेस एनालिटिक्स जॉब्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें रीडर्स चाहिए, क्योंकि डेटा अवेलेबल है। इस सोच को रखते हुए डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस की ओरिजिनेशन हुआ। द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स इज वेरी सिंपल, कि आपके पास डेटा होगा, आप जैसे केमिस्ट्री लैब में काम करते हो वैसे आप एक टेक्नोलॉजी लैब में काम करेंगे। डेटा होगा, डेटा को क्लीन करना होगा, डेटा के अंदर जो बुरी चीजें हैं, गंदा डेटा है निकाल दो, जो रेलिवेंट डेटा है नहीं है उसको निकालेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल एक बहुत अच्छा टूल है, उसको थ्रू हम एनालिसिस करके डेटा के अंदर इंसाइट्स निकालेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो डेटा जो हमारा नंबर था, अब हमने इस ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैनेजर्स डेटा को रीड करेंगे और उसमें से हिडन इंसाइट्स निकाल के बताएंगे कि बिजनेस में कल ये होने वाला है, आज हमें ये चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स इज बिजनेस एनालिटिक्स, कि ये एक में काम नहीं करेगा, हमें चाहिए लोग इसके अंदर जिनको एनालिटिक्स के साथ साथ बिजनेस की नॉलेज हो। इसीलिए बिजनेस एनालिटिक्स इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, स्पेशली फॉर पीपल हु आर डूइंग मैनेजमेंट, क्योंकि इसका रॉ प्रोडक्ट निकलेगा बिजनेस के डेटा से। और वो बिजनेस को समझने वाला वो कौन से लोग हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो एमबीए करेंगे। इसकी salary is very very good, it's growing in numbers, there is no if you have the skill set, there is no dearth for occupational uh, problems or hiring process, because in this case the demand is more, supply is less. आप लोग सप्लाई फॉर्म में है, इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जितना हमें सप्लाई मिलेगा इस कोर्स का फ्रॉम पीपल लाइक यू हु आर रेडी टू वर्क इन द इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इज रेडी टू हायर एज मेनी एज पीपल बट विद द राइट स्किल सेट। अब इसको बनने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले डोमेन नॉलेज, दैट इज एमबीए करनी पड़ेगी, जो आप लोग करने वाले हैं, जो आप बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं। एमबीए की नॉलेज से हमें पता चलेगा कि डेटा को रीड करना, डेटा को समझना, तो ये हमारा होगा डोमेन नॉलेज, दैट इज डोमेन नॉलेज में भी एमबीए एचआर, एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग। Along with that, you would require a little logical bent of mind. I do not say maths and statistical aptitude, but even a logical bent of mind will help you. The reason I say this is because हमारे पास सारे tools हैं जिनके अंदर इन एआई, ऑटो एआई काम कर रहा है, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, जिसके अंदर इनग्रेन्ड है उन टूल्स के अंदर। कंप्यूटर साइंस के यहाँ टूल्स बने हुए हैं, आपको बस टूल, जैसे आप एक ऐप को यूज करते हैं, आपको एक टूल को पढ़ना है, वो टूल के अंदर सब कुछ इनग्रेन्ड है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल एप्टीट्यूड। आपका काम है, आपके पास एक लॉजिकल बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए, एक डेटा को रीड करने का बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए, और जो आप टूल्स या कंप्यूटर साइंस के टूल्स अप्लाई करेंगे, उसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है आपको समझने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। फॉर दैट यू रिक्वायर लॉजिकल एंड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा इन बिजनेस, जो एनीवेज आप अपनी एमबीए में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो एमबीए में आप दो चीजें पढ़ेंगे, डोमेन नॉलेज एंड मैथमेटिकल एंड लिटिल, नॉट मोर ऑफ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बट मोर ऑफ स्टैटिस्टिकल एप्टीट्यूड। तो आप ब्लू और ऑरेंज को वैसे ही एमबीए में पढ़ेंगे। बस क्या होगा, एनालिटिक्स ऐड करने के लिए हम आप लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे कंप्यूटर टूल्स के ऊपर, जो आपको कंप्लीट कर देगा डोमेन नॉलेज में भी और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल नॉलेज में भी। सो दीज आर द स्किल सेट दैट यू रिक्वायर। अब टॉप डेटा साइंस स्किल्स में क्या है, आपकी बिजनेस स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर प्रैक्टिकल स्किल्स, समझना बिजनेस को, समझना बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, डेटा रीड करना, एक इंट्यूटिव फीलिंग आनी कि डेटा मुझे कुछ कह रहा है, मैं उसको बेटर किसी टूल में डाल के उसको एनालाइज करूं। एंड सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी है डेटा एनालिटिक्स में, क्योंकि मोस्टली बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट साइड पे काम करते हैं, जहां क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो, आप समझते हो कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, जिसके करने के लिए आपके स्किल्स होने चाहिए कि आप इंटरैक्ट कर सके। So your presentation skills and interactive skills are important because you have to understand client demands and try to provide him those type of practical business analytical skill sets through data. तो ये कहाँ यूज होता है? बिजनेस एनालिटिक्स का यूज आप नेम करेंगे वहां पे वो यूज होता है। बिजनेस सेक्टर में, हेल्थ केयर में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स। तो आप देखिए द पोटेंशियल।
सो हर एक के सामने बताया गया है कि कहाँ कहाँ में क्या क्या उसकी रेलेवेंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है। हेल्थ केयर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, अब ये जो सारा काम हो रहा है कोविड पे, वो इतना फास्ट जंक्चर इसलिए उठा पाया था क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर किया था। देन यू टॉक अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला कार्स बहुत जल्दी दुबई में लॉन्च होने वाले हैं। फाइनेंस, फॉर दैट मैटर कस्टमर सेगमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, रिस्क एनालिसिस, कितना क्रेडिट किस कंपनी को, किस इंसान को देना होगा कि वो उस हमारे को धोखा नहीं देगा। बैंकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग में पूरा असेंबली लाइन का ऑटोमेशन। ई कॉमर्स तो सर्वाइव ही करता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में, जहां आप सेंटिमेंट एनालिसिस करते हो, रिव्यू एनालिसिस करते हो, अपने कस्टमर्स को समझते हो, उनका सेगमेंटेशन, एसटीपी एनालिसिस, सेगमेंटेशन, टारगेट पोजिशनिंग की एनालिसिस करते हो, जिससे आप प्रोडक्ट राइट कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट इट रिक्वायर्स स्किल सेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका डेटा कहाँ से मिल रहा है? कंप्यूटर, आपके सोशल मीडिया से डेटा आपको मिल रहा है, आपके फोन में जो आप डेटा यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये सब डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो जो डेटा है एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड, पेटाबाइट, जीटाबाइट, बहुत ज्यादा डेटा रिलीज हो रहा है। डेटा को पढ़ने वाले लोग चाहिए। अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो आपको जरूरत पड़ेगी सर्टेन बेसिक फंडामेंटल स्किल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, आपको विजुअलाइजेशन टूल्स के समझने की, बिजनेस डोमेन को समझने की, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आजकल सब कुछ क्लाउड सर्वर्स पे कुछ नहीं रहा, क्लाउड पे सब कुछ चला गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इस सेगमेंट में नहीं बात कर पाएंगे क्योंकि इट इज ऑल टुगेदर अ बिग सेगमेंट। आपको जरूरत है कम्युनिकेशन की, मैंने जिस तरह से बताया, क्योंकि जो आप एनालिसिस करेंगे उसको आपको कम्युनिकेट और स्टोरी टेल करना है अपने कस्टमर्स को, और मशीन लर्निंग एक्सेट्रा की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप शेयर कर लेते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। तो लेट्स गो टू क्वेश्चंस। Okay, wonderful. I got humongous count for data analytics, so I can see that you people have already made sense of it. So, students, what we could do is, I suggest to you that if you like, I can see Gitanjali and Shubham's hand raised. Okay, so let me go by Shubham because Shubham had said first. So let me allow him to talk. Did I do what? It's Ayush, sorry. So, okay, Gitanjali, Shubham, if you could re-raise your hand. Gitanjali, allow to talk. Gitanjali, can you hear me? Shubham, I'll take you next, please. Gitanjali, you can either put it in the query box or I have allowed you to speak. Unmute yourself, Gitanjali. Hi, sir. Neetu ma'am, I think they have by mistake, raised their hands. 20 minutes. I Sorry, think, Purnima ma'am. Yes, yes, ma'am. ma'am. They've I raised their think, hands. by mistake, mistakenly they have raised their hands, I believe. So, Okay, okay. they can, if they have some queries, they can raise that through the chat. So kindly please close the allowance that you have made them to speak. They are only allowed to post their queries and questions through chat, and they all are aware about it. Okay, okay, ma'am. Okay. Sure, sure. So, students, let's put it in chat so that we are in a better position to quickly handle all of them. What is the working difference between data analyst and data scientist, Shubham? I got your query. So basically, Shubham, when it comes to industry working, with the kind of flattening of organizations and delimiting of roles, what happens is that now to make a demography or departmentalization of data analysts, data scientists, is quite difficult to do that. The reason is
You start with a data analyst, but someday you get pushed towards becoming a data scientist. Or for that matter, you start with a data scientist and maybe you will be pushed towards a data analyst. However, at your stage, if I were to give a difference between a data analyst and a data scientist in a very layman, is a data analyst is a person who belongs to maybe a business management profile, who has data, who will be using a already developed tool, and that tool, you don't have to code that tool. The code is already developed, like Microsoft has its platform tools. Then there is IBM has it. For that matter, Microsoft has it, Amazon has it. So each of these companies have defined their own tools. They're selling it in the market for business analytics. The business people buy it, and business analytics put data in the business analytical tools and make reformations out of that. So this is one aspect, okay? What is a data scientist? So what does a data scientist do? He could be having a more technical background, wherein he could be a BTech and an MTech or an MCA, who would be able to work on coding languages. Now, they are the people who are more exposed to coding languages like C, C++, Java, .NET, etc., who ASP.NET, who have greater input of being able to develop the entire platform on its own. So coding के through हम analysis करते हैं data के. For example, R programming, Python for that matter, they are all coding languages which help you to make sense of data. So something, if I give you a very layman example, अगर जैसे हम सोचो हम घूमने जा रहे हैं फॉरेन कंट्री और वहां पे खाना नहीं है, चाइना फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, वहां पे इंडियन खाना मिलता नहीं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. या तो हम क्या करें, यहाँ से पैक्ड फूड हल्दीराम से ले जाए, वहां पे पानी में डालें और बॉईल करके खा लें. सो दैट्स अ डेटा एनालिस्ट. बना बनाया टूल है, बस मुझे डेटा डालना है और मेरे को कंज्यूम करना है. या हो सकता है आप वहां जाएंगे, एयरबीएनबी में रहेंगे, वहां आपको एक किचन मिलेगा, किचन में आप अपना सारा खाना कलेक्ट करके वहां आप अपना छोटा मोटा खाना बनाएंगे. तो आपने क्या किया, राइट, स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स to a place, to everything, you have to make the food on your own. So that is where coding languages come up in business analytics, and that's what data scientist is all about. So if that makes sense, but the problem is that as you mature being a data analytical person, you have to move towards data science as well. And if you are a data science person, you might have to move to data analyst. So the line of LOC is not very well defined. It may merge. However, you can confine yourself to data analytics. If you like it, then you can excel towards data science eventually. Because programs like Python, etc., are object-oriented languages. So they are not tough. They have a platform of Java. If you know Java, well and good. If you don't know Java, even then you can learn Python very easily. It will require about 6 months' time if you're a non-technical guy. And if you're a technical background or you have the logical sense of development, you can develop it within 3 months. Moving on, ma'am, is business analytics good career in future? Yes, it has, and it is, frankly telling you, it is going to be. Today, it is more out of compulsion that a management student has to do analytics, but in times to come, it will be a part of the core management course, because data needs, businesses are surviving on data. Businesses are surviving on a model of e-commerce. And when business process transformation happens, you require data. And when data is there, a data analyst has to work. So this is going to be, so no matter how good or bad we are with technology, we need to be aware of technology. So the faster and the sooner we equip ourselves, the more better for us for a career growth, for a safer career landing, and for a safer and a faster career growth. If the data, so that's your question there. Then Amit says, if the data would have been shared by him in the market, then how? If the data would have been shared by him in the market, then how? Amit, if the data would have been shared by him in the market, then how? Now, this is something which is dodging me to understand. If you could reframe it, Amit, I would be able to understand. I'm not getting... if the data would have been shared by him, who is the him in it is something I am not understanding.
अच्छा, for a data analyst हो सकता है. So if the data has been shared by a data analyst in the market, then how? What you have to tell me then how? What are you asking in a question? So maybe Amit, we will ask your question in the next set of queries that I take up, Amit. So we hold on. You have time to reframe it, and I will address your query later. Neetu ma'am, there is another question Okay, ma'am. by student Anurag, and he says, can a non-tech graduate student make his career in the field of analytics? Sure, ma'am. Thank you. So for this question, I would say that the business analytics students right now who are doing PGDM, only out of the entire 100% batch, 80% were people from law, were people from political science, were people from BBA. Most of them were from, a few of them were from BCA. That again brings us closer to a technical course. And we had about 10 to 15% only as students from BTech. So you can very well understand that we do not say that we require technical skill set. Yes, we require a logical bent of mind, a logical flow of mind. We require people who, people who can put up effort and dedication. At the end of the day, there are certain tools which need to be equipped with. आपको पढ़ाना है, हमें certain tools. जैसे आप HR पढ़ेंगे, ऐसे आप finance पढ़ेंगे, जैसे आप marketing पढ़ेंगे, वैसे एक tool है जो 4-5 टूल्स हैं जिनको हम आपको पढ़ाएंगे. तो वो टूल अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एनालिटिक्स कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स को वेंचर कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट, जहां थोड़ा टेक्निकल मुझे चैलेंज लगता है कि आजकल हर एक टूल के साथ आपको एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर आपको एक टूल लगाना है डेटा के लिए, जहां पे आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आपके उसके अंदर से हिडन इनसाइट निकालनी है, तो आपको क्या करना है? आपको एक पूल बनाना है जहां डेटा बैठेगा. फॉर दैट एग्जांपल आई विल से दैट हम एक विलेज के पास रहते हैं और वहां पे एक छोटा वाटर बॉडी है. अब मेरे को अगर वाटर पीना है तो मैं उस वाटर बॉडी के पास जाऊंगी और वहां से वाटर लेके आऊंगी. बट उस वाटर बॉडी के पास वाटर आता कहाँ है? वो वाटर आता है थ्रू ट्रिब्यूटरीज, सो रेन एक्सेट्रा. सो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, जिससे मेरे पास एक वेल क्रिएट हो जाएगा या एक वाटर पूल क्रिएट हो जाएगा. वहां से जाके मैं वाटर को ड्रॉ कर सकती हूँ पानी पीने के लिए. इन द सेम मैनर, इन ऑर्डर टू गेट डेटा एनालिटिक्स, आई रिक्वायर डेटा. डेटा को उठाने के लिए मुझे एक वाटर पूल चाहिए डेटा का. एक मुझे पूल चाहिए जहां डेटा बैठेगा. और उस डेटा का कहां से? डिफरेंट जगह से सोर्सेज आएंगे. मे बी किसी मैनेजर ने पुराना डेटा स्टोर किया हुआ है एक्सेल फाइल में, ईआरपी से डेटा आएगा. फॉर दैट मैटर किसी और टेक्नोलॉजी टूल जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, और डेटाबेसेस हैं, ओरेकल डेटाबेसेस, एडब्ल्यूएस, अमेज़न डेटाबेसेस है जहाँ से डेटा आएगा. तो ये इतने सारे सोर्सेज है, डेटा कहीं पर बैठेगा. वो जो बैठेगा डेटा, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डीबीएमएस उसको कहते हैं जहाँ पे डेटा बैठेगा. अब डेटा बैठ तो गया, अब डेटा डेटा की लैंग्वेज भी समझेगा. तो मुझे एक लैंग्वेज चाहिए जो डेटा के अंदर से डेटा को पढ़ने लग जाएगा. वो जो लैंग्वेज होती है उसको एसक्यूएल कहते हैं. तो अगर यहाँ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जापानीज प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है तो उसको एक मॉडरेटर चाहिए, जो उसको ट्रांसलेटर चाहिए, जो उसको ट्रांसलेट करेगा. इन द सिमिलर मैनर मेरे पास एक टूल है और मेरे पास डेटा का पूल है. इन दोनों को बातें करने के लिए मुझे एक लैंग्वेज चाहिए जो टेक्निकल लैंग्वेज है. तो उसको बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो एक डेटाबेस को रीड करना शुरू कर देगा. तो मुझे थोड़ी एसक्यूएल की नॉलेज चाहिए और थोड़े से 2-3 मुझे थोड़े टूल्स की नॉलेज चाहिए. तो एसक्यूएल के लिए, एसक्यूएल भी बिल्कुल टफ लैंग्वेज नहीं है, नॉन टेक्निकल बच्चे पढ़ सकते हैं. आपको एसक्यूएल चाहिए और आपको डेटा टूल्स चाहिए. दोनों के लिए आपको मेहनत करनी है. जहां आप एचआर या फाइनेंस या मार्केटिंग के लिए मेहनत करेंगे, उसी जैसे आपको एक बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. बस यही डिफरेंस है. So nothing can be no as long as you know how to work for it and there is a direction towards working to it. Which language is used for data analytics? One is structured query language. The other is R is a powerful language, but it has become redundant in businesses because its scope is less. It can handle less database to query and to solve.
Highest in the market is Python for now matter. And now we have very, very, very powerful tools like Microsoft Power BI, then Cognos by IBM, we have Tableau, etc., which will help empower data to be made sense of. So, yes. So these are the languages that we have to study. What are the skills required for business analysts? So to do a business analytics role, all your questions are there in my PPT, which I have. So I am sharing my PPT once again, and we stop with the questions. Again, we will come back. Okay? So another 10 minutes, I will be done, and we can then ask queries and close this session. So as most of you have asked that what are the languages that we will have to do, you basically have to do Excel very well. You have to do Python, R, and SQL. So these are the languages that business analytics teaches you. So we are all equipped with these things to work with to be a business. अब हर एक इंसान हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता. For example, I am aware about SQL and tools. There are some people who are very well equipped in Python. Some people are very well equipped in R. However, everybody has their own expertise. So I am equipped in SQL and I am equipped in tools like Cognos, Power BI, Tableau, and so on. So आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका फीचर कहाँ बैठता है और आपको किस चीज की अंडरस्टैंडिंग या किस चीज का इंटरेस्ट उठता है. सो दिस इज व्हाट इज दिस. सो ये एक सिंपल एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया हुआ है, तो इसके अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस है. जो अगर आपके पास टेक्सचुअल डेटा है, जो अगर आपके पास डेटा है जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और आपको उसमें से हिडन मीनिंग इवॉल्व करना है कि ये सेंटिमेंट्स क्या है. फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, तो उसके अंदर उठ के सेंटिमेंट्स क्या आ रहे हैं जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया हुआ है. तो उसको समझने के लिए हम एक सेंटिमेंट एनालिसिस टूल, जो एक पावरफुल एनालिटिकल टूल है, जिसको हम कर सकते हैं, जो हमें रिजल्ट जैसे देगा कि सेंटिमेंट ऑफ दोस टेक्स्ट इज, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, इमोशंस क्या है, गुड. तो यहाँ पे एक मॉडलिंग यूज की जाती है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल, जो एनालाइज कर देता है कि गुड, बैड, सैड, एंग्री, एक्सेट्रा, और इमोशंस निकल आते हैं. तो इससे रेसिपिएंट को, या फॉर दैट मैटर अगर मुझे रीडिजाइन करना पड़ा वो पूरा एक टेक्स्ट फॉर मे बी अ मीडिया मैगजीन, मुझे समझ सकता है कि मेरे को नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं दिखाने, मुझे पॉजिटिव, तो मैं रीफ्रेस कर सकूं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे आपकी ग्रामरली है, वो ग्रामरली भी आपका यूज कर रहा है टेक्स्ट एनालिटिक्स, सेंटिमेंट एनालिटिक्स, एंड इट इज यूजिंग योर लिंग्विस्टिक्स फॉर एनालिटिक्स एज अ फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो आपको एनालाइज करके दे सकता है कि क्या आपका टेक्स्ट है, इमोशंस क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो उसमें एक मॉडलिंग का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन. और क्लासिफिकेशन का ऑन अ होल ये सब को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पे ये एक एआई की फंक्शनिंग है, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है इस डेटा के ऊपर. तो ये एक आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया गया है. डेटा को करने के लिए डेटा एनालिस्ट का काम क्या है, तो वो बेसिकली डेटा को निकालता है, ढूंढता है, क्लीन करता है डेटा को, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर उसको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्राफ्स बनाता है, विजुअल ग्राफ्स बनाता है. फिर मैनेजर्स उन ग्राफ को रीड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जिससे कि वो रीडिफाइन कर सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल को. सो दिस इज वन एस्पेक्ट of doing data analysis. तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा one by one to become a data analyst. बहुत ज्यादा डेटा ओरिजिनेट हो रहा है. क्या प्रॉब्लम है? डेटा आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है वो स्ट्रक्चर्ड आ रहा है, सॉरी वो अनस्ट्रक्चर्ड आ रहा है. मीन्स टेक्सचुअल डेटा, इमोजीज, फोटोग्राफ्स, ऑडियोज एक्सेट्रा. जो डेटा हमें चाहिए वो एक्सेल में जो आ रहा है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है. प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, 80% ऑफ द डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड. तो उस डेटा में से मीनिंग निकालना इवन मोर चैलेंज. तो ये थोड़े कॉम्पिटिशंस है जो हम एनालिस्ट को फेस करना पड़ता है. बट ड प्रॉब्लम इज कि जितना हमें पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्ड है, उतना एज अ एनालिस्ट हमें पता है कि डेटा को उन्होंने खराब कर दिया. मीन्स उन्होंने राइट डेटा, जो डेटा था उसको रप्चर कर दिया है अच्छा दिखने के लिए, जिससे आउटपुट अच्छा है. So to be good data analyst, to get a good meaning out of data, the more unstructured the data is, the better hidden insights you will get inside data. So this is like a mantra for data analysts.
The more the data is bad, the better is the data analysis in terms of output interpretation. फिर डेटा क्या करता है? डेटा आपको डिस्कवर करने का हिडन मीनिंग करता है, डिटरमिन करता है कि अभी हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आगे क्या होने वाला है बिजनेस में, और क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स की एनालिसिस हो जाएगी, हम प्रिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक गुड यूज ऑफ डेटा. सो डेटा वेयर हाउस के अंदर हम नहीं जाएंगे, इस सब के अंदर हम नहीं बैठते क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा. सो दिस इज वेयर my presentation is ending. So data scientist, why do you need a data scientist or a business scientist or a business analyst in your domain? It will help managers to take better decisions. It will better refine the business strategies. It will help you to become the best in the competition, because you are analyzing yourself through data continuously. You will be able to get better growth opportunities in times to come, and you will be able to spot the target audience, who your customers are, through data analytics, customer segmentation, targeting, etc. So students, you may find this a little out of the board at times, the words used. Don't worry. You will be soon joining the management program. So slowly, steadily, whatever we have put in a small presentation today, every day, every subject, every aspect of your management cycle, आपको एक छोटा information और knowledge इसके बारे में मिलती रहेगी, so that by the end of the 1 year of your course, आपको इस सब की knowledgeable information हो जाएगी. So sometimes you need to start the over with the 6 so that you can take it easy in the last ball, right? Something like what happened with India-Pakistan match this time. So let's start with a 6, and then slowly, steadily, we'll be even stronger to hit a bouncer. So that's what my spirit is. But everything will be taught to you. There is nothing that I have learned out of the blue. I also learned it just like you people. So slowly, steadily, it's just time, patience, understanding at the right time, giving your best to the subject, whatever you study in management, to your right perspective, doing it to your best. Your only work is, as and when the course comes to you, to study hard. Somewhere in between, we will put business analytics also, give you avenues if you are interested in business analytics, so that if you want to do it, you can still very well do it. So there is nothing. It's all good, all happy, and we begin at a good start, and just give your labor and intense integrity to the program that you are, and you will be able to touch the limits. Courses don't differentiate. It is the personal enthusiasm and dedication that differentiates people. Not today, not tomorrow. Again, I will say courses don't differentiate. It is the integrity that you put to the course that you are doing that will make all the difference. So on this note, I am stopping my sharing. This is the only thing that I have for now for you people, for analysis, for data analysts. I wish you all luck. May you all be great managers, get good jobs, have a good learning journey. And we just now tackle a few questions which are left, so that with that we will be subliming. हम ये program को खत्म कर देंगे. So the question of Shubham is, are we going to learn about data analytics in MBA program? So Shubham, you will be studying design thinking in your first trimester. That is like a very, very beautiful subject to open your minds for different subjects, inclusive of business analytics. Secondly, slowly and steadily, what we've done is we've offered, IBM has certain courses and certification courses which offers you business analytics program. So in case you want to do it over and above, we even have IBM certification on a very, very minimum cost. It is just less than 2-3 pizzas if you want to eat in a month. The cost is just equivalent to that. So you can do an add-on program where you get certifications from IBM. You can do that. Along with that, the course, people have the option of opting themselves for maybe in the later half of the specialization to opt for analytical subjects. Maybe if you want, you can diversify from there itself. So there are options. As and when you take the course of MBA, you will be guided through on it. So then we have another question.
what is the difference between data analysis and data science? I answered this question, but once again, data analysis can happen through Excel, but data science would happen through Python. In this, you do coding. In this, you don't require coding. In this, you require technical expertise. In data analytics, you do not require technical. In data science, you require technical expertise. What does a data analyst do on a daily basis? The data analyst doesn't do anything on a daily basis. He basically just helps to collect data from the business, clean the data, work on the data, do analysis, take breakers, get backs to data. So he is only making sense of data. So the whole day he's analyzing the data and giving an output to the business, analyzing the data, giving an output to the business. So it is like adding to the links of the business which have got lost. And that data can add the link towards business कि क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. अच्छा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो मैन आवर्स को कितना कॉम्पनसेट करना चाहिए, कितना मेरा प्रोडक्शन और शेड्यूलिंग में नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज होने चाहिए. So it provides you that linkages between the business to make sense through data. So all the time a data scientist is actually directly working with the strategy team to rethink as to how the business has to be taken care of, what are the problems, what are the opportunities. So you are very, very closely working with the board members who are working towards the business development aspect of a business. Ma'am, if we are choosing the finance as that, so is there any role in data analyst? Yes, of course. The beauty of data analyst, the slide I showed you, data can be used in a finance firm, in a marketing firm, in a manufacturing firm, in a healthcare firm. So if you are into finance, you can be a finance analyst. So you will be working on a data which comes from financial inputs. Similarly, an HR person will work on HR data. The marketing person will maybe work on sales data. So the kind of data you read and you analyze depends upon the domain of business that you belong to. Likewise, if you have knowledge of business analytics, certain tools, then you become a techno-functional role of a business analyst. What are the main sources from where the data is collected? So the main sources is historical data, past data. Mostly in organizations today, we are collecting OLTP data, transactional data that we get from ERP, enterprise resource planning. So that is altogether such a big model, itna bada aspect hai. Don't worry, when you do MIS, when you do subjects of IT in MBA, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा इन सब के बारे में, ERP के बारे में, और आपको इसके बारे में भी पूरी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा somewhere as a subset of MBA program for IT and for MIS and other computational programs that you have. Thank you so much, Neetu ma'am. We will close the session now. Okay. And, I hope that today's expert talk on fundamentals of business analytics, role in management will help all the students broaden their horizon and augment their interest to pursue analytics due to its increased vitality in the corporate world. I would like to thank Dr. Neetu Kamra ma'am for taking out time from her busy schedule and guiding the students. Thank you so much, ma'am. Also, for taking the effort to organize. You're working very, very hard and you're working for the cause of the students. Thank you, ma'am. Students, I would like to inform you all that today was the last pre-induction session, which was the 15th session for the MBA students. And we will now be meeting all of you on 17th September 2022 for Arambh, that is your orientation. Detailed information about the itinerary and what all you need to bring, everything will be shared by by your mentors, and they already are sharing with you. From 19th September we are starting the classes for MBA program. So 17th is the orientation. Do come and attend the orientation and start your sessions. You all have been eagerly waiting for your classes, so now the time has come for all of you to join, so please be there. Thank you so much, ma'am. I'm concluding the session.